is a matter of communication that involves each of us in our day-to-day business life, the day-to-day professional life, and this is a routine problem. This is a routine activity, and there are issues that go with interpersonal communication, like how our understanding of social situations, understanding of workplace situations, understanding of family relationships, understanding of relationships with colleagues, with our say authorities and our staff, that affects the nature of communication. So this is a very crucial issue. Most of the time it is being ignored, and I hope everybody is able to listen to me. Yes, we are. Am I audible, sir? Yes, sir. Sir, Yes. Assalamu Okay. alaikum, sir. So, Yes, sir. so, Walaikum yeah. salam. So what happens that the nature of communication depends more on certain Good issues. morning, sir. Yeah, good morning. The nature of communication depends upon certain issues. Like the first important issue is the context where we are really working. It might be your workplace, it might be your college situation, any situation. It can be a business situation. It can be a situation of your even at home. People are working from home. So these are the factors. One is the contextual factor. The second factor is what choice we have got for communication. That is, we are normally exercise our communication with certain choice of words, choice of language, choice of communication. And when you have choice, when you have uh, context, you have the situation of also building up on relationships. We work with colleagues, we develop relationships with them, right, on the workplace. Then we also have, we also have, we also have a situation where we need to understand what kind of discipline we are interacting, right, with. For example, a person of social science, and he's interacting or she's interacting with the science. So there are certain common understandings that go between the disciplines, that people understand each other, irrespective of different disciplines. People coming from sociology, from history, from geography, from science, interacting on a platform. These are the things. You are interacting with your students, you are interacting with your superiors, you are interacting with your authorities, and day-to-day interaction is a routine affair, I say. But there are issues also, and we also consider that what topic we is the focus of interaction. Topic is important. So when you say context, that in which context we are, either we are in a teaching context, we are teaching to postgraduate students, to undergraduate students, we are teaching to our very advanced learners of that subject, maybe research students. So that varies, communication varies accordingly, we need to say. And therefore, this variation has taken a different kind of studies, which we call it as interpersonal in nature, right? Interpersonal communication, right? What variables affect it? It can be also one very important aspect is the nature of the subject also. What kind of subject that is in focus. And then it could be also how authentic our communication is, right? This is also important. How authentic our communication is. This is very important in the sense that, for example, we call rules of communication. But rules of communication, sometimes it is confused with rules of grammar. So communication is not simply that you set a certain kind of rules for it, and then you set and one of the rules that I gave you example just now is about that we are talking about grammar. That grammar would be an essential condition for communication. Once we talk about the grammar of communication, it has a different kind of grammar. It involves so many other factors like technical, like social,
and building on relationships, right? And let me give you one example that sometimes communication model was viewed as linear models. Like somebody will be communicating to someone, someone will send a message, someone will receive a message. That was a kind of a communication. But things have changed now. You see, what happens that sometimes this linear model of communication undergoes a different kind of a change, right? These linear model of communication is affected by, rather it is influenced by so many other factors like register. I am using the word register. Register means that language of a discipline. If you are teaching political science, or if you are teaching history, and if you are teaching chemistry, so you are in that language discipline. The discipline, the language of chemistry is different from language of geography, right? Language geography, and this is important that you need to understand that in what way uh, geography or the discipline is going to affect my communication. There are certain terms that are special to that discipline. There are certain especially technical jargons that are special to that discipline. But at the same time, we need to know that if that is special to one discipline, may not be special to the other discipline. So we need to set certain common grounds of communication, which is very important. And this is uh, in during that terms, when we say we are using one term register, or when you say this is the language of political science, this is the language of English literature, this is the language of office communication, right? These are the important considerations, that when you say choice, we exercise choice depending upon the kind of situation that we are in. So one is the situational context, right? One is the situational context. The second one is the social context. The third one is the nature of building relationships. And when you have a combination of these factors, social factors, the register factors, the genre factors, in what kind of genre we are dealing with, right? Only then it happens that what kind of communication. For example, sometimes when we are sending our messages on LinkedIn, right, the genre is different from normal kind of communication that we do in office communication. So office communication is different from communication on WhatsApp, right, and all these things. I'll give you one example. Let's begin with example, because it has to be more like an interactive kind, right? So what happened that we'll begin with a very simple example of a company. I'll read out a passage for you where you will find out what happens. Vandas master ji घर में Yes. So there, this passage, I'll read out just a few lines for you. One very important aspect is that there is one person known as, for example, Amit. He is the leader of the department, and this is a business situation where you have a situation of communication. The department assigns extensive works of business communication, business dealings are there, and Amit is, I'm giving you an episode. Amit has 6 managers. Amit is problem is that his communication is extremely manager based. Amit's manager, Good morning, sir. are joined by young professionals who are extremely good at communication. Now, Amit communicates only with his managers, whereas the young team that has joined him, they are very dynamic, they are very focused, and they have only to report to the managers. The communication between the leader of the organization, Amit, and the youngsters who are there is not much. So this is the hierarchy. So communication is flowing through this hierarchy. And unfortunately, in the company, managers are not competent as the young professionals. But this is a typical situation that can happen anywhere.
right? And one of the manager was, a baggage type. Another was a critic of everything. Another was specializing in some technical qualifications. One of the manager felt that if there is a need for communication, I will communicate. And another manager felt that if people will need my communication, then I will respond to them. Now, these are the four different situations as I talk to you, right? As I mentioned right now. Now, uh, the motivation levels were coming down with managers, and the youngsters who were reporting to the managers, right? They were not satisfied with the nature of communication. And as I told you that this there is a cycle of communication not going on what the leader thinks, what the manager thinks, and what people who report to the managers, they think about the communication hierarchy. So it's not like very straight downward kind of communication or straight upward kind of communication. The mobility of communication is affected. And then there are issues of conflict. There are issues of, communication that cannot resolve those conflicts. And there comes the role of interpersonal communication. That is, I have summarized. And this happens in any setup, that people on the top, they have some understanding about the situation. They communicate to the next set of people. The communication then flows to the next set of people. And there are issues with the grassroots kind of, employees or the workers, and that those things are not being communicated to the top. This is one of the point where we are talking about. And then I'll draw your attention that what happens that when you go uh, and communicate your concerns to the employer, they simply listen and they reply. And I'm reminded of a very famous quote of Stephen Covey, where he said that most of the time people listen to reply, they do not understand. So interpersonal communication involves a kind of understanding, empathy, trust, building relationships. So this entire session is all about that. And I'll give you another example that somebody was attending an interview. Um, um, See, that was reported in LinkedIn messages, and the candidate wanted to give the interviewers a thank you kind of note. She did not know what was the result of the interview, and it was a business interview going on, and she said thank you notes. She wanted to give a thank you note to the interviewers. Then another version is that there is a shift from thank you notes to follow-up notes. That the interviewer, one of the interviewers, she wanted that the interviewees who were attending, they should build on relationships after the interview is even that is over in a institution. One person might be selected, the others may not be selected, but still you can build on that relationship. So shift from what is interpersonal communication here is that in a situation like this, there is a shift from thank you notes to follow-up notes. So this is another example. One example I gave you about the business situation, how communication is affected by certain different kind of hierarchies and different kind of presumptions about one level of hierarchy with the other level of hierarchy. The other point is that sometimes what happens, yes, am I audible to everyone? Hello? Yes, sir. You are Yes, audible. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this thank you. So these are the concerns here of communication. And sometimes what happens that in a model like this, we presume that we have to, I'm talking about now forms of address. I'm coming to this situation.
So in this situation, normally we think that sir or Mr. or Miss or Mrs. They are forms of address that can be used in a formal situation. But communication nowadays have changed this concept as well, right? So normally what happened, that it's the context of situation or culture. Culture is another part where we will be talking about that. In formal contexts, we don't know people and we want to show respect to them. We use titles such as Mr. or plus family name like sir or madam or doctor or professor or miss or miss. They are all considered as safe options. But you see, as I told you, that interpersonal communication has a different kind of angle. The one important angle is what is the culture of communication that is going on. So this is a very important aspect, that the culture of communication demands something else. It is not going for a only kind of a linear kind of communication. And I'll take you to a discussion for a see. Let me present you one file. I'll share you a screen. Can you see this screen? All of you? जी सर Yes. Yes, sir. yes sir Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Visible. Thank you so Yes, much. sir. Okay. Now let's look at what kind of interpersonal relationships come. This was an article written by Karan Thapar, as he writes one article in Hindustan Times way back, and this was I'm just forgetting the dates, but it was on why I refuse to address guests on my show as sir. This is an example of interpersonal communication, right? I'm trying to suggest you. Sir, I think this is another slide. This is, you're not getting the picture. WhatsApp slide. नहीं सर Actually, आपका WhatsApp WhatsApp slide. खुला हुआ है This is a WhatsApp. So your WhatsApp screen is This is another visible. slide, sir. This is your WhatsApp. You're not able to see this screen. Why I refuse to address guests on my show as sir. आपका जो I, WhatsApp I am है, able to see No, sir. the screen, but Sir, Sir, it's a WhatsApp chat, sir. only for WhatsApp has been opened. WhatsApp chat, sir. Acha. Then please change the forms of slide, address. sir. No. This is no. This is not coming. Okay. Just a minute. Can you give me some time? Okay, sir. ओके सर Okay, this is another one that. Oh, how can I get out of it? सेम स्लाइड Okay, I understand that part. Stop presenting. Now it's clear. Hmm. Okay. Yes, यस sir. सर Okay, fine. Now let me start again once again. This was an article by Karan Thapar. I'll try once again. I don't know what is happening. Right, presenting. I'll try once again.
Is it clear now? Hello. So we are Why? able to see your folder. Yes, sir. Screen is clear, sir. Yeah, why I refuse to address guest on my show as sir? Not yet, sir. Not again the So same it's slide the coming? folder that No, No, this is सर not आपका same slide. फोल्डर slide, खुला sir. हुआ है, जो स्लाइड different slide. जो फाइल आपको खोलनी है उस पर क्लिक करिए, वो ओपन हो जाएगी अब। अच्छा, इसको फिर बंद करना पड़ेगा। हेलो, पीपीटी खोलनी है या एक्सवर्ड? पहले आप अपना ये खोल लीजिए, उसके बाद एक मिनट, इसको ये फाइल है मेरे पास। इंटरव्यू करना था बस। हाँ, उसको डेस्कटॉप पे ले आइए, क्लिक कर दीजिए, खुल जाएगी, उसके बाद शेयर कर दीजिए। हाँ, वो वही फाइल हम खोलना चाह रहे थे। डेस्कटॉप पर ही है फाइल वो। क्लिक कीजिए उस पे। सर ये तो एविडेंट है, स्क्रीन अब कर हुआ कि लीजिए नहीं? सर। नहीं, क्लिक्स ऑन डेस्कटॉप। नो सर, ये फोल्डर खुला हुआ है कोई। सर क्लिक्स ऑन डेस्कटॉप इफ यू आर फाइल ऑन डेस्कटॉप। सर डेस्कटॉप पे क्लिक करिए, राइट साइड में जो कॉलम आ रहे हैं, लेफ्ट साइड डॉक्यूमेंट डाउनलोड, वहीं पर आपका डेस्कटॉप ऑप्शन सर लेफ्ट कॉर्नर। लेफ्ट साइड 3D ऑब्जेक्ट। पे ये 5 यस सर, ऊपर नीचे, यस और ऊपर ये ऊपर। डाउनलोड। नो सर, आप क्लिक्स ऑन डाउनलोड्स ऑप्शन। आपने डाउनलोड पे सर क्लिक किया है। अच्छा, किस पर क्लिक करना था? डेस्कटॉप पे वो डाउनलोड, राइट ये सर कॉर्नर। डेस्कटॉप डेस्कटॉप, पे ये क्लिक करना यस था। यस सर, डेस्कटॉप आ गया वहीं। 3D के नीचे सर, हाँ, 3D के जस्ट नीचे, 3D 3D and ऑब्जेक्ट के documents नीचे है between डेस्कटॉप। नोट से जस्ट ऊपर 2। सर राइट कॉर्नर पर डेस्कटॉप एंड डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन है, आप वहां क्लिक कीजिए। राइट दिस कॉर्नर। पीसी सर, वहां देखिए दिस पीसी, उसके नीचे 3D ऑब्जेक्ट, उसके जस्ट नीचे है सीरियल डेस्कटॉप। नंबर 5 में है सर, ऊपर से राइट टॉप कॉर्नर, टू बॉटम 5 नंबर लेफ्ट पर। कॉर्नर, राइट लेफ्ट कॉर्नर, कॉर्नर, लेफ्ट लेफ्ट। कॉर्नर सर, राइट कॉर्नर नहीं सर, लेफ्ट कॉर्नर की तरफ देखिए। आई थिंक कोई Left एक आदमी corner। बोलिए, एक आदमी कोई बोलिए। अभी भी नहीं आया सर आप नहीं अभी सर, नहीं आया। अभी सर इसको कट कर दीजिए पहले। So when you are sharing the screen, I think only one folder is being selected. What Mazhar sir has been saying is that we should share the whole screen, the whole part. So अच्छा, since चलिए the- छोड़िए, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, छोड़िए, ऐसे ही बताता हूँ। हेलो, हाँ, राइट। So there is an article by Karan Thapar. I will, सब टाइम बहुत लूज हो जाएगा इसमें, right? I am not able to do that right now, so please excuse me, right? So this is an article by Karan Thapar where he is talking about why I refuse to address guests on my show as sir, right? And this was a face-to-face interview on right. So when he used to conduct interviews on face-to-face program, and he says that I received a letter the other day. It's a very small piece, and I decided to reply in public through this column. He was asked, Karan Thapar was asked as to why you don't address people on your guests when you conduct interviews as sir. Then he says, I noticed that you have different ways of addressing the people you interview. Now, this was the question. It began. Some you call Mr. X, or some you call Mrs. Y. Others you refer to as minister, and then sometimes you use their first names. Why? This was the concern expressed by the audience. So why is it like that? And how you decide what to call them?
I just gave an example, took up one example of forms of address, right? And how this, sometimes we think that we can address a person by sir, but Karan Thapar refused on an interview. Why? And this was basically an example of interpersonal nature. So he was interviewing David Waddington, who later became Britain's Home Secretary. And his boss, Samir, advised him, Karan Thapar's boss, Samir, advised him that don't address your interviews as sir, because that will not put you on the same pedestal. So look at the expression that comes later, that this question took me back to 2 decades to an interview with David Waddington. In 1983, he was Mrs. Thatcher's Minister of State for Immigration. It was going to be my first big interview of the political person. And Samir Shah, who was the chairman of the BBC, and he was the producer of Eyewitness, where Karan Thapar was also involved. Remember Karan, Samir advised, right, you either call him Mr. Waddington or Minister, but not sir. Now, this is an example of what I'm trying to tell you, is example of interpersonal communication. That why? The reason was simple. Sir, as understood in British English, is differential. It would place Waddington on a pedestal above the interviewer. This was the reason. So interpersonal relationship depends upon the rank and situations. Yet the assumption of a political interview is that interviewer and interview were equal. So once you consider that interviewer and interview are equal, do not address the person as sir. That was the message that came from Samir. Okay. And this happened with Karan Thapar. And at the same time, the subject of interview that was important with Karan Thapar was, he was interviewing about changes in British immigration rules which had disadvantaged the Asian community. And who was the person who he was interviewing with? He was the Home Secretary. So it was a sensitive subject. But Karan Thapar dealing with a sensitive subject, and he was not addressing Waddington as sir, rather he was addressing him as Mr. Waddington, or right. This was the difference. The reason was very simple, that both the interviewer and the interview, they are basically on the same platform. They cannot be put on a hierarchy level. So this was the one example, right? And the issue of addressing him as sir was ruled out. And then Karan Thapar says that since then it has become my golden rule. Whenever I'm interviewing positions in authority, be they ministers, MPs, industrialists, bureaucrats, or dignitaries, or of special standing, I refer to them as Mr., Mrs., Miss. Now look at the communication angle. Earlier we were taught that people of higher authority should be addressed like this. But Karan Thapar changes his rule depending upon the situation, depending upon the context of culture, depending upon the kind of assignment he has. So the role of interpersonal relationship becomes very important, right? And I refer to them as Mr., Mrs. or Miss. If they are in government, I call them minister. And let me tell you why. You won't really carry conviction if you have to say, I'm sorry, that's not right, sir. So it's a matter of conviction for the journalist, and a very reputed journalist like Karan Thapar, right? That he addresses him not as sir, but as Mr. And that first sounds very contradictory immediately, but it's not contradiction. It has got its message implicit in it, that
we are on the same platform. We are sharing the same page, right? Whether you are minister, whether you are home secretary or foreign secretary, it doesn't matter. So this was one example of interpersonal relationship. And however, things are very different when I'm doing it, when I call a chat show interview. Now, again, rule changes. The rules of communication changes, right? He says, this is when the glamour and celebrity status of the guest is the reason why I'm talking to him or her. It's not current affairs interview where you are probing policy or questioning decisions. Instead, I'm inviting the interview to share anecdotes from their title, from their life, which are designed to reveal their personality and what it's like to be in their shoes. So again, the rule changes. To call them Mr. or Miss would distance them. And when he is talking about persons of authority, persons of dignity, he is addressing not as sir, he is addressing him as Mr. But when he is talking to a celebrity, and when he's talking to people like celebrity, he again changes the rule, and he lessens the note of formal address there. So it would introduce a note of formal separation that would divide the discussion. On such occasions, I will call my guests by their first names. For example, he was interviewing Shah Rukh Khan, he's calling him by first name. And there he recites another reason. He said a celebrity, the talks with celebrity involves some kind of not so formal talks. And therefore, I have interviewed them like Javed Akhtar, Shah Rukh, Madhuri, Sharmila, Vikram, and Sachin Tendulkar. Vikram Seth. So because people he knew it, he was addressing them by first names. So celebrity people have got another way of address, and however things can get a wee bit awkward when I interview people when I know them who are leading politicians. Now again, situation changes. You see, while he was addressing Home Secretary, he is using Mr. Weddington. While he is addressing, taking interview of Javed Akhtar, he is addressing him Javed, right? And at the same time, when he knows politicians like Shashi Tharoor, right, he addresses not as Mr. Tharoor, right? Rather, he uses the name as Shashi Tharoor. And he adds another reason for that. Except I know him as Shashi, Mr. Tharoor sounds odd. So my compromise is either not to take his name at all or to refer to his full name. That still fulfills the required formality without collapsing into the familiarity of first names. Now there is another situation here that he didn't want to take the name of Shashi because of his over familiarity with him, because he was his friend. Rather, he maintains a midpoint situation of communication, midpoint situation of form of address, and that is Shashi Tharoor. So this is where I was trying to refer to these three examples, that the forms of address that we have traditionally come to know, that you have to use Mr. for a higher authorities or very formal context. The context changes and the forms of address also changes. The context changes because of the interpersonal nature of relationships, and therefore the forms of address also changes. This is where my point was, that how it has to go about. This is one thing. The other thing is, right, in the same setup, right? Let me again try if I can get another one, because I am committing, I am some another file. No, I'm not able to do that. Anyway, in another passage, article that is on Sunday sentiments in Hindustan Times, this was also published in December 2024, right? Karan Thapar was asked that why do you interrupt so much in an interview? Very interesting question. So he writes, I am often told I interrupt too much.
that seems to irritate several viewers of my interviews. Let me hear what your guest has to say before you butt in, is the most common response. These responses raise the question, when is an interruption unavoidable? So, not just understandable. So, he is talking about that interviewer must never interrupt and wait patiently till the guest stops. This was a concern for him. Rather, it's for a different thing. It all depends on what the interview is saying and what kind of relationship is to the question that is being asked. In turn, you have to bear in mind that the interview is not a platform for the guest to say what he wants at whatever length or chooses. It is a question and answer based discussion. Now look at the situation here. In the beginning, I was talking about that interpersonal relationships or communication, they all depend upon what kind of subject we are dealing with, where we are dealing with, what kind of genre we are involved with, and what kind of situation that we are in. Here is the same situation that when you interview a person, especially on this level, right? Interruption is essential and unavoidable. That is what Karan Thapar says. Why? Because that could be the case if the guest is simply baffling and doesn't know, or if he has chosen to deliberately steer off course and even consciously wasting time. So he might be skirting certain important issues. He might be avoiding certain important issues to be discussed. So in a time-based interviews, right, the last could be of careful strategy, how this allotted time he could utilize for a better interaction and better meaning making sense, right? So interruption is necessary from the point of view of a journalist. An interruption should not be taken as a kind of impolite behavior. But when to interrupt, how to interrupt, this is the seasoned communication of a journalist like Karan Thapar. So in order to achieve clarity and to avoid confusion. So this is one of the fourth example I am citing it. So if a guest relies on unfamiliar acronyms, you need to interrupt to spell out what they mean. Some jargons, acronyms, or whatever you want to say, some cliches. More important, if a guest's meaning is lost in a long-winded or confusing expressions, right? You need to interrupt to clarify. So clarification is one of the goals for interview. But if the interviewer is very clear, he would definitely ask questions for clarity and for clarity for whom? Clarity for his audience. So this is an important. It may be apparent to him, or even if you suspect it's not clear to the audience, you need to interrupt for their sake. This, no doubt, is annoying for those who are easily following the point. But remember, there are others who may not be. When Karan Thapar is conducting an interview on television, face to face, there might be certain audience who are absolutely at ease with him, with his kind of communication. But there might be some who may not have understood the entire context. So for them, clarity is essential. And in order to achieve that clarity and to avoid miscommunication or confusion, if an interviewer is interrupting him, that is quite permissible, not a kind of an offending thing to the interviewee. That is what the point is. And this is where my fourth example of interpersonal communication is. So if it's not a polite but immediate and firm interruption is required, that is where I was talking about, is that's also the case if the guest is potentially libellous, rude, or obscene. Such interruptions are by way of caution in case zeal or passion has overcome judgment. So it is important that when two people are locked in forceful and contentious argument, and that often happens in an interview, they must talk to each other for clarity. The intervention is for clarity, to avoid any kind of confusion. And they will talk over each other.
but these are not interruptions per se. It's just the way passionate discussions happen. This is often the case when the guest challenges the interviewer and is resisted. Sometimes the guests do not like as why it is his questions are like this. He's getting these questions. I think Tim Hawkins and Stephen Sakur, when they were doing BBC interview, they in the show like Hard Talk, many of you must have seen those programs, right? There they were talking very in a very straightforward manner. The title was Hard Talk, so there were straightforward questions being posed to the interviews, and some of them felt very uncomfortable, but they had to clarify. And both of these anchors, very reputed anchors, I don't know how far up now whether this program still continues or not, right? But I have not seen Hard Talk, right? There they are putting very straightforward, clear questions to the and very sensitive subjects are being dealt. It could be gender violence, it could be anything, climate issues, and so or political issues, or whatever is in the current news, right? Any kind of controversy that has erupted because of that. So they are not apologetic about asking questions, clear questions. And then Karan Thapar also at the same time, he also sets certain rules for interruption. First, he says, never interrupt rudely and never lose your control. This is a communication point from the point of view of communication. The best way is to interrupt with an apology, right? So it takes some of the sting out of it. Second, when you interrupt, ensure you do so successfully and preferably not frequently. Failed interruptions serve no purpose. Repeated ones, not surprisingly, annoy. So these are the things. That there are certain rules for interruptions as well. He sets the ground for it. The third, however, is the most important. It has to happen at the right time. The timing of the interruption is also important. So the communication is very important here, that an alert interviewer will sense the need to interrupt, when to interrupt, or sooner than the audience. But if he jumps in at that point, it will be too early. The audience won't be ready to accept it. So wait till the viewers realize this guest's error. So you have to go with the audience as to this is the right time for interruption. Timing is important. And then stop him. Now the audience is likely to be on your side. So a good interviewer carries very well with his audience. He goes with his audience and he can predict the timing of the interruptions. Right. This is where, in fact, that's the key to a successful interruption. You must convince the audience it was necessary. The reason for that is simple for them. Interview is a sort of performance. Two people stage a conversation. If the audience is appreciative, if the audience appreciates, both seek. If you lose it, the interview will lose its ration. That applies to interviewers as much as it does to their guests. So, just a minute. So, what happens that 2-3 examples we have discussed right now. One was about forms of address, and here we can see that the first one I began, I'll recapitulate before we open it for discussion, right? Yes, I think Mr. Rishi Kant has raised his hand. We'll take your questions. The first one that I began with was that of a business situation where
poor leadership was the one angle to it, and the leadership was not able to uh, uh, communicate well with his employees. Right? This was one situation. The second was of a LinkedIn example, how thank you notes are just not thank you notes, but they are follow-up notes after the interview. The third one was the forms of address that Karan Thapar changes the rules of the game. And the fourth was the nature of interaction. And in all these four situations, right, we have got the nature of communication involved. And they all depend upon the context. They all depend upon the situation. They depend upon the genre. They depend upon the topic. They depend upon what kind of relationship is where between the participants, whether they are teacher, student, whether they are doctor, patient, whether they are guest and interviewer, and so on. And then communication is not like that it has got rules taken from a grammar book. It's the rules of use that is important. So basically, it is social linguistic in nature. And now I can invite our participants to interact with me on these issues. If there is some question, we have a question from Mr. Rishi Kant. Yes, Mr. Rishi Kant. Hello. Now I open the discussion. Friends, it was a wonderful case study of how to interview a person, and he has taken the case study of Karan Thapar. Yes. You know that Karan Thapar is a PhD from Oxford University in international relations. He belongs to my discipline, but he is known in media. He writes well, and many of you may have seen his famous or infamous interview of Mr. Narendra Damodar Modi ji, where within 3 or 4 minutes he leaves the interview. Prime Minister, at that time he was not Prime Minister, he was Chief Minister of Gujarat. He leaves the interview, and till today he hasn't given interview to him. और बार बार मोदी जी पानी पीते हैं, तो ये करण थापर जो है पानी पिलाने वाला आदमी है लोगों को. True. And I think a similar kind of exercise Professor Raashid ji can do. He referred in a passing way Stephen Sakur's Hard Talk interview on BBC. Yes. On BBC, this person is so well known. Recently, after the retirement of Chief Justice Chandrachud, he interviewed him in 23 minutes. Chandrachud को भी पानी पिला दिया इन्होंने. Chandrachud was very proud of himself. I am PhD from Harvard University. I delivered the most difficult judgment on Ayodhya, and I approached God. So he was feeling very high. उनको भी जमीन पर उतारा. Mr. Stephen Sakur. Yeah. 23 minutes में 23 minutes का interview है. It is available on YouTube. Please watch that. So you will understand the significance of interpersonal communication, which is the topic which Professor Raashid Nehal has taken up today for discussion. उनके इंटरव्यूज देखिए हार्ड टॉक के. पहले Mr. Karan Thapar also was working for BBC earlier. He gave the example किस तरह से सर कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए. It's very important. Interpersonal relations. अभी कभी कभी हम जोक में बता देते हैं कि एक नया लेक्चरर जो अपॉइंट हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर, he wanted a leave or how to write a leave application.
Right. तो उन्होंने लिखा कि अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लिखा, मुझे कैजुअल लीव चाहिए. He writes like that, sir, as you know that my wife is pregnant, I want 1 day's leave. अरे भाई, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैसे पता कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है? The art of communication in the written Yes. form is very difficult. You have to learn about these things, and I'm very happy that Raashid Nehal ji has touched a very, very important theme. He teaches even madrasa students about communication skills, and we are fortunate enough to have him here today. Thank you, sir. The Thank floor you, sir. is open for I just wanted to mention about Chandrachud's interview. Yeah. चंद्राचूड को पूरे जमीन पे उतार दिया स्टेफन साहब ने, अच्छा. और वो परेशान हो गया. चंद्राचूड वाज वरीड. अच्छा, वो उठ के भाग के जा भी नहीं सकता है इंटरव्यू छोड़ के, क्योंकि लोग कहेंगे अच्छा देखिए प्रधानमंत्री और ये दोनों एक ही किस्म के लोग हैं. तो he continued, he was annoyed, but he answered all the questions. That is, आप अनविलिंग है आंसर देने के लिए, आपके अंदर से जवाब जबरदस्ती खींचना is an art. Yes. of interviewer. Interview का मतलब क्या है? You are entering into the world view of the other person whom you are interviewing. Interview का मतलब होता है that you want to know the world view of the person with whom you are talking to. It's a very, very serious job. Interviewing is an art, and everybody cannot acquire this art. You get this art, you become expert by practice. Friends, the floor is open for everybody now. You can ask questions, seek clarifications, seek guidance about interpersonal communication. मोहम्मद अबू शाहिद सर. Yes, please. सर, जो आपने करण थापर के इंटरव्यू के वन एस्पेक्ट बताया, दूसरा एस्पेक्ट उनका ये था कि वो जब भी जिसका इंटरव्यू लेते हैं तो उस आदमी को उसके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं रहता कि मैं उनको सर से एड्रेस करूं या ना करूं. बहुत यंगस्टर आते हैं उनके यहाँ, फर्स्ट टाइमर, मगर वो कभी इस तरीके के प्रेशर से इंटरव्यू नहीं लेते उनसे. उनको फील ना हो तो वो लोग भी उनको इक्वल पेडेस्टल पे एड्रेस करते हैं. Yes, true. दोनों साइड से एड्रेस होता है, वो इक्वल पेडेस्टल पे होता है, तो वो अच्छा लगता है. ये सार्क यूनिवर्सिटी में रहा, जो सर आप बता रहे थे कि कम्युनिकेशन में जो है टाइम, प्लेस और सोशल चेंजेस जो आते हैं उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है. तो उस इंस्टीट्यूशन में मैं था, वहाँ पे प्रोफेसर के फर्स्ट नेम के साथ बोल सकते हैं. वहाँ सर करने की कोई जरूरत नहीं है. स्टूडेंट जो एड्रेस करते हैं वहाँ प्रोफेसर एक्स में प्रोफेसर वाई कह के एड्रेस कर सकते हैं. अगर हम ये एड्रेस ये ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में कर दे तो शायद हमारे ऊपर जो है बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन भी आ जाएगा. ये ऐसे बोलता है. नहीं, यू आर राइट. आप अपने हालात देखने पड़ेंगे, कहाँ पूछ रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेसर विजय साहब ये बोल रहे हैं कि कहाँ पर अब क्या बोल रहे हैं. सेम सर और सेम नेम, एड्रेस बाय नेम कैन वर्क डिफरेंटली फॉर डिफरेंट मीनिंग मेकिंग इंटरप्रिटेशंस, राइट. और इन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में आपने अगर सर नहीं कहा तो लोग ऑफेंडेड फील करेंगे, राइट. तो ऐसा हो जाता है. लेकिन अगर आप यूएस में हैं या इवन इन जेएनयू में हैं, अगर आपने मिस्टर प्रोफेसर नाम लेके ले लिया, प्रोफेसर ऐड कर दिया, तो वहां पे लोग माइंड नहीं करते हैं, बिकॉज इंडिया में भी वेरी करता है सिचुएशन. पीपल हु हैव कम फ्रॉम डिफरेंट सेटिंग, तो वहां भी वेरी करता है. एक कल्चर पर डिपेंड करता है कम्युनिकेशन. तो अच्छा ये ऑब्जर्वेशन था आपका. Any other? I had an opportunity to watch live interview of Karan Thapar in Delhi, in Claridge's Hotel, some 10-15 years ago, 10 or 12 years ago. When he was interviewing the former Prime Minister of England, Tony Blair. Tony Blair का interview we were among the audience. Yes, sir. We were sitting there. Audience has no right to ask questions. Only, these two persons were shown on the screen.
So we know, how tough master Karan Thapar is. Only one interview I have seen. I was luckily attending a conference in Delhi, and we were all asked to, if you were interested to watch Karan Thapar's interview. We found it, we found that we are very lucky persons to be part of Karan Thapar's interview. Only once I had this occasion. It's very interesting. Other people, any other person who has any question, observation to make? Okay, every day you are indulged in communication. Yes, and एक तो घर में पति पत्नी के साथ कम्युनिकेट करता है, पत्नी पति के साथ कम्युनिकेट करते हैं. वहां भी you should know the techniques of convincing the other. Otherwise conflicts will arise. Yes. इस पे आप रोशनी डाल सकते हैं, निहाल साहब. जी ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है फैमिली में जब होने लगता है. देखिए अभी सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अभी लेक्चर लेना था, तो मैं यूज था लेक्चर लेने के डिपार्टमेंट से, मुझे कंफर्टेबल लगता था. तो द मोमेंट आई स्टार्टेड सेटिंग अप माय थिंग्स, लैपटॉप वगैरह सेट किया मैंने, तो मुझे लगा कि कहीं से हम कुछ मिस कर रहे हैं. कभी वो पॉइंट रह गया, कभी ये रह गया, और जिसके से एग्जैक्ट फाइल को हम रीच नहीं कर पाए और आपको हम दिखला नहीं पाए ऑन स्क्रीन पर, राइट. बट डेफिनेटली आई विल शेयर दोस फाइल्स. तो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी फिजिकल थिंग से भी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है. फिजिकली आप मतलब उसको अलाइन करना पड़ता है कम्युनिकेशन को. जो है आप मतलब ये लैपटॉप की सेटिंग मेरी डिपार्टमेंट में बहुत सिंपल है. हम गए यहाँ पर रखा और फौरन जाकर सेटिंग हो गया, मिल गया. अब यहाँ पर मुझे एक एक चीज करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरा ध्यान थोड़ा भटका हुआ था, राइट. And I was not able to concentrate on that part. तो जब लोग आगे पीछे जा रहे थे, मेरे घर फैमिली के लोग सब जा रहे थे, राइट, I had to tell my son कि अभी नहीं, अभी चुप रहो, अभी लेक्चर हो रहा है. I had to tell some other person who were coming, the milkman, कि अभी नहीं, नीचे घंटी बजाओ, राइट. तो वो भी एक फैक्टर्स होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है. और ऐसे ही होता है. देखिए हम लोग तो सब कॉलेजेस में काम कर चुके हैं, यूनिवर्सिटीज में काम कर चुके हैं, कर रहे हैं काम. तो कभी कभी लोगों से मिलना, सर अथॉरिटी से मिलना, किसी अथॉरिटी ने टाइम दे दिया, किसी ने आपको टाइम नहीं दिया, किसी वक्त आपको टाइम की जरूरत है. दोनों में कितना फर्क पड़ जाता है 3 वेरिएबल में. अथॉरिटी ए ही गिव्स यू टाइम एंड ही गिव्स यू पेशेंट लिसनिंग. एक उसका फर्क हुआ डिसीजन में. अथॉरिटी के पास टाइम नहीं है, आपसे सिर्फ कहा 2 मिनट में. जैसे जनरल जरमुद्दीन शाह साहब थे, तो उनका ये कहना था, सर आपको याद होगा, ये जस्ट कंप्लीट योर थिंग्स इन 2 मिनट्स, राइट. अब आपके पास इतना प्रॉब्लम है, आपको 2 मिनट में अपनी बात करनी है, राइट. पीपल लर्न टू कम्युनिकेट हाउ टू रिपोर्ट थिंग्स इन 2 मिनट्स टाइम. और उसी तरह से कभी टाइम नहीं मिला सर, जब आपको वक्त ही नहीं मिला, तो कम्युनिकेशन आपका हुआ ही नहीं. आई थिंक इस पर रोशनी सर बहुत अच्छे से डालेंगे. मिस्टर जमीरुद्दीन शाह, the vice chancellor of former vice chancellor Aligarh Muslim University, who was also vice chief of Indian Army. Yes. Before becoming the vice chancellor. Yes. When he took up the charge as vice chancellor, he advised, all the head of departments, chairmen, I was one of them, that any letter which the chairman sends or addresses to the vice chancellor has to be of only 1 page. And he said, I have no time to read your 10 page or 5 page letter. Yes. Writing a long story is easy, but writing in abstract form, say when the newspaper says your article has to be only 1,000 words, that is more difficult. Yes. You have to think a lot. Within 1,000 words, you have to put all your ideas, yes, which you want to communicate to the highest authority, that is the vice chancellor. Yes, sir. So that is an art. In our educational system, we were taught earlier during our school days, college days, what is known as pressy writing. Yes. Yes, sir. Read 3 pages and summarize in 1 page. Yes, sir. It is known as comprehension
test. Yes. Whether you have comprehended the meaning of the text. Yes, sir. Earlier, when the net examination was introduced, Yes, sir. there used to be a long passage, And students were asked to read the entire passage and answer the questions. Yes, sir. No, the answers to those questions were found in that long passage. Yes, sir. Now that that part has been given up, because entirely the net examination has become EMCQs. Yes. You know, since then I have stopped going to ENTA for you know, preparation of question papers, because you can't judge somebody's knowledge, ability to communicate, ability of writing, if you have no written component. If everything is tick mark, yes, Yes, no, sir. yes, no, you know, 4 options are there, you select the one option as the correct answer. True. तो मैं कभी कभी ह्यूमरसली कहता हूं कि भाई, जब आप इस तरह का नेट एग्जामिनेशन रख रहे हैं तो अपने यूजीसी के गाइडलाइन चेंज करें और कहिए कि पीएचडी थीसिस भी एमसीक्यू फॉर्म में होगा, not in the text form. Yes, yes. We are making joke of our educational system. Yes. You know, that is my view. Yes, sir. मिसेस सर, आपका सही कहना है कि पीएचडी कम्युनिकेशन जो है, हम लोग मिसेस हरजिंदर कौर का अभी सवाल लेने वाले हैं, राइट? उससे पहले जो सर आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि पीएचडी जिसका मतलब है एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन, काफी कम्युनिकेशन इन डिटेल, राइट, अबाउट एनी सब्जेक्ट, अबाउट एनी टॉपिक, राइट? यू आर सपोज्ड टू डू योर पीएचडी ऑन ए वेरी एक्सटेंसिव लेवल, राइट? बहुत इंटेंसिव उसका स्टडी हम करते हैं. That's why you need such big spaces, right, on chapterization and all that, and full referencing is there. अगर वो कन्वर्ट हो जाए एमसीक्यू में तो उसका क्या आलम होगा सर, राइट? राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर आपका ऑब्जर्वेशन है कि नेट से एमसीक्यू से आप चाह रहे हैं कि पीएचडी की कैपेसिटी डिफाइंड हो. दैट कैन नॉट बी डिफाइंड. You can qualify a net exam, you can qualify a JRF exam, but still you may not be a good writer for PhD. You cannot be a good presenter for PhD, and it is happening that students are not able to write well for their PhD chapters. सर, आप तो समझ ही रहे हैं इस बात को कि आज का एक अनेक्डोट सुनाता हूँ आप. जी. ये आप ही के डिपार्टमेंट का, इंग्लिश डिपार्टमेंट का. जी. One PhD scholar submitted before submitting PhD in the English department. जी. Got her PhD thesis copy edited outside the English department. जी. This is very shocking. जी. दूसरे डिपार्टमेंट वाले इंग्लिश डिपार्टमेंट को आना चाहिए कि भैया मेरी थोड़ी अंग्रेजी देख लो. जी. अब अंग्रेजी डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट और उनके सुपरवाइजर, दे आर आउटसोर्सिंग द वर्क ऑफ कॉपी एडिटिंग to another department or another teacher who is not of English department. So this is the tragedy. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. You take up the question of yes, Mrs. Kaur. Harjinder Kaur. Yeah, Harjinder Kaur. आप अनम्यूट कीजिए. Okay. Good morning, sir. Good morning. सर, मेरी एक ऑब्जर्वेशन भी है. बीइंग अ टीचर, मैं क्लास में बच्चों को उनके नाम से बुलाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनके नाम याद रखूं, उनके नाम से बुलाऊं. तो अगर नेम याद नहीं हो पाते हैं तो और क्या ऑल्टरनेटिव मेथड्स हो सकते हैं बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने के, जिससे अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशंस बने रहें? देखिए, नाम याद करना बहुत अच्छी बात है, और 90% ऑफ टीचर्स दे डू ऑब्जर्व दिस प्रैक्टिस, राइट? कभी कभी ऐसा होता है बच्चे काफी हैं क्लासेस में, आप नाम भूल जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि दोबारा हम उनसे फिर नाम पूछते भी हैं, एंड दे रिकॉग्नाइज दैट समटाइम्स यू हैव मिस्ड माय नेम, राइट? और उन्हें बताते हैं. तो वो एक अच्छा प्रैक्टिस है कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड दे गेट ए सेंस ऑफ रिकॉग्निशन. ऐसा लगता है कि आपने उनको सर्टिफिकेट एक दे दिया, और एक पर्सनल टच भी लगता है. पर्सनल टच भी लगता है. देखिए, अगर आप चाइना में पढ़ा रहे हैं तो नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है. चाइनीज नेम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. इंडिया में अपनी एरिया में पढ़ा रहे हैं तो इट इज वेरी इजी. ये भी राशिद निहाल हैड सम प्रॉब्लम्स इन अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ के नाम अजीबोगरीब नाम होते हैं. Yes, very difficult. Yes. So that is an important practice that teachers observe, right. Thank you, Dr. Mrs. Kaur. Yes, शहजाद आलम साहब जी, बोलिए.
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत है? जी सर, दुआ है सर। हम तो कई बार ट्राई किए आपसे मिलने का, बट अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाए। जी 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 जी, बताइए कैसे हैं? बट बताइए ये क्या है कि सर आज आपके टीचिंग्स की वजह से, बिकॉज आई ज्वाइन AMU किशनगंज सेंटर अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ राशिद निहाल सर। जी जी जी। और सर हमने ड्राफ्टिंग सीखा सर आपसे। हम लोगों से इतना करेक्शन करवाया आपने रात रात भर बैठकर, and now I feel that I gain much of it. Even our MP used to ask me to draft some confidential letter for him. So नहीं, that credit goes to इसमें Raashid हम Nehal लोग की sir. भी लर्निंग होती थी शहजाद साहब, आपको याद होगा जब हम लोग साथ जी सर। बैठते थे कोई ड्राफ्टिंग करने के लिए, तो जी जब सर। आप अपने जो है कलीग्स के हेल्प कर रहे हैं या जिनके साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों आदमी सीखते हैं, कोई एक आदमी नहीं सीखता है। राइट, जी सर। जैसे आप सीख रहे हैं तो आपके बहाने हम भी सीखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या होना चाहिए, सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है, थिंग्स लाइक दैट। राइट, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था आपके साथ काम करने का। जी सर, हम लोग बहुत आगे तक ले गए सेंटर को। यस, फिर आप चले गए तो फिर मामला रुका। जी जी जी। So that was a very nice thing to learn. At workplace, writing has a different kind of nuances. और authorities क्या समझना चाह रही है इस वर्ड से, आप क्या लिखना चाह रहे हैं उस वर्ड से, मीनिंग चेंजेस हो जाता है, मीनिंग में काफी डिफरेंस होने लगता है, कम्युनिकेशन में डिफरेंस होने लगता है। तो कभी कभी अथॉरिटीज ये कहती है कि ये वर्ड लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, एक्सप्लेनेशन में आप ये 2 वर्ड लिख दीजिए तो काम चल जाता है सर। जैसे कभी कभी हम लोग PhD रिपोर्ट्स कभी कभी लिखते हैं तो दे इंसिस्ट ऑन, सर जब तक आप नहीं लिखेंगे द कैंडिडेट इज अवॉर्डेड PhD, राइट, हम उसको मानेंगे नहीं यार साहब, जबकि आपने साहब सब कुछ लिख दिया, लेकिन वो जो वहां का एक आदमी बैठा हुआ है ऑफिस में, वो एक ही लाइन पढ़ता है, दैट उसी को चाहेगा फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री। तो वो ऐसे ही हो गया, कम्युनिकेशन ऐसे ही हो जाता है कभी। ये थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। To make your communication very effective, right choice of words is very essential. For that, you have to always keep, besides you, Roget's thesaurus. Yes. Mr. Roget's was actually a doctor, medical doctor, and he has done a great service to English teaching people, language teaching people. He prepared what is known as a dictionary of antonyms and synonyms. Synonyms, yeah. एक वर्ड के इक्वलेंट वर्ड्स या हैविंग इक्वलेंट मीनिंग के कितने वर्ड्स हैं? But sometimes what happens when you write a sentence, you are not satisfied. You want to say something, but the word which you have used is not communicating what you want to say. True, sir. When you look at antonyms and synonyms, oh my God, I was looking for this word. You knew the word, but it was not coming to your mind at that time. So that is why I advise all the people not only keep dictionary but also keep Roget's thesaurus. Yes sir, Roget's thesaurus. Yes. On your desk, study desk. Yes sir. वो एक और एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं, आप तो सर जानते हैं जी। देखिए ऐसा एक मिथ बना हुआ है कि इंग्लिश वालों को इंग्लिश आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं देयर इज अ डिफरेंट मिथ टू इट, डिफरेंट थिंग अटैच्ड टू इट। एंड सर मैं एक सवाल पूछूं इसी पॉइंट पे, मेरे लिए एक रेलेवेंट ये था, बताना बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं मल्लापुरम सेंटर पे काम करता था, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर था, वहाँ पे एक रिपोर्ट बनानी थी, फाइट हुई थी, झगड़ा हो गया था स्टाफ में, नॉन टीचिंग स्टाफ में, उस पे रिपोर्ट बनानी थी। मैं लॉ से था, एक इंग्लिश डिपार्टमेंट थे टीचर, और दूसरे जो है इकोनॉमिक्स से थे, 3 टीचर थे। तो रिपोर्ट बना के पहले इंग्लिश वाले लेके आए और उन्होंने कहा कि सर सिंस यू आर फ्रॉम लॉ डिपार्टमेंट, check it whether it will be legally justifiable or report is can be sustained before the court. तो मैंने देखा, अब ये हुआ प्रॉब्लम कि जब देखा उसको तो मैंने उनसे पोलाइटली कहा कि अगर मैं इसको एडिट करूंगा या इस पे मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दूंगा तो ये इसमें 70% चेंजेस हो जाएंगे, 30% आपकी बात रह जाएगी, और अगर इस पे राजी हो तो मैं इस पे करूँ, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो फिर से मैंने उसको लिख के दिया। तो दोनों रिपोर्ट में ड्रास्टिक डिफरेंस थे। अब उसमें एक एस्पेक्ट मुझे आमतौर से नोट हुआ कि उन्होंने जब लिखते वक्त जो है लिटरेरी टर्म यूज कर दिए, जबकि लीगल टर्म यूज होने चाहिए, और उन टर्म से उसकी मीनिंग और अलग हो जा रही थी, बदल जाती है। तो ये एस्पेक्ट है कि जब रिपोर्ट बनाए तो किसी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट को बनाने के लिए कौन आदमी सुटेबल इसके लिए होगा, क्या
का होगा, लैंग्वेज का आदमी, या कोई लीगल एस्पेक्ट उसको जानने वाला हो, उसका बैकग्राउंड जानने वाला, वो बेहतर होगा। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए, इसमें एक चीज है, इसमें हम लोग जो है एक जॉनरा वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे पॉलिटिकल साइंस के लोग पॉलिटिकल साइंस के वर्क को एडिट अच्छा करते हैं, हिस्ट्री के लोग हिस्ट्री का वर्क करते हैं, लेकिन सोशल साइंस की लैंग्वेज और लिटरेचर लैंग्वेज दोनों में बहुत डिफरेंस है। लिटरेरी लैंग्वेज जो है थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज होती है, और आप इसीलिए देखा होगा कि पीपल फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट दे राइट वेरी वेल इंग्लिश, दे राइट वेरी गुड इंग्लिश। उसका रीजन आपको हम बता दें कि इरफान साहब, जो प्रोफेसर इरफान हबीब साहब हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, इतने फेमस प्रोफेसर, उनकी जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, और उनका इंग्लिश से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप देखिएगा क्लैरिटी जितनी है। फैजान साहब भी हैं, फैजान साहब हैं लीगल, हाँ, फैजान साहब भी हैं जी। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज एक्सपर्टीज इज जस्ट द डोमेन ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, इट्स जस्ट अ मिथ, राइट? लैंग्वेज एक्सपर्टीज कैन कम फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट। A man of chemistry can also write very good English. A man of geography can also write a good English. Political science में अच्छे लोग लिखते हैं इंग्लिश, हिस्ट्री में लिखते हैं, इकोनॉमिक्स में लिखते हैं, खासकर इकोनॉमिक्स, अच्छे इकोनॉमिक्स की आप अंग्रेजी देखिएगा, they are write very simple English and they sound very meaningful. तो ये होता है। और लिटरेचर में क्या होता है, लिटरेचर जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में दे डील विद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, फिलॉसफी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को डील करते हैं, तो लैंग्वेज उसी हिसाब से फ्रेम होंगे, लेकिन उसमें क्लैरिटी उसमें भी आ जाती है। जो आदमी उसके क्लैरिफिकेशन अगर अचीव कर लेते हैं तो वो दे आल्सो राइट वेरी सिंपल टर्म्स। तो ये एक मिथ है कि लिटरेरी इंग्लिश लिखना चाहिए हर जगह। हर जगह इसकी जरूरत नहीं होती है, समवेयर इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट में लिटरेरी इंग्लिश लेकर के माने बदल सकता है, जैसा अभी आपने कहा, लेकिन अगर आप सिंपल क्लियर फैक्चुअल अंग्रेजी में बात कर लेंगे तो शायद वो ज्यादा ऑब्वियस वहां पर होगा लीगल सिचुएशंस में, राइट? मैनेजमेंट की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है। आप ये देखिए, पीपल फ्रॉम मैनेजमेंट दे राइट, पीटर ड्रकर की इंग्लिश बहुत अच्छी है, एंड सो ऑन, सो मेनी पीपल। तो ये इसलिए होता है कि वहां पर जब आप पढ़ते पढ़ते यूज करते करते लैंग्वेज आ जाती है, तो यू अचीव क्लैरिटी फ्रॉम दैट डिसिप्लिन से भी आपका इफेक्ट होने लगता है, राइट? अब जैसे पॉलिटिकल साइंस में सर आप एग्जांपल बता रहे हैं, द वर्ड एलेज, इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ एलेज, जर्नलिज्म में काफी यूज होता है, दे नो हाउ टू यूज द वर्ड एलेज, बिकॉज वहां पर न्यूज़पेपर्स को जरूरत पड़ती है, इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है, लेकिन ये मालूम चल रहा है कि ये आदमी मर्डर का उसमें नाम आ रहा है, सो ही यूजेस द टर्म एलेज्ड। अब वो एलेज का मतलब है कि इट इज सब पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन एलिगेशंस लग गया है, राइट? So that is how meaning changes, and meaning के अपने अपने nuances हैं, right? So that is one good aspect of that, how genre and profession of a discipline, professional disciplines, they give a different kind of meaning effect to the communication. Any other observation or comments that you want to have with us? We want to share with us? Good morning, sir. Good morning. Sir, as you already mentioned that writing in economics is need to be very simple, because we have been taught that we have whatever as a economics you have to write very concise way. Yes. Sir, what is the exact way to write something in simple as well as in concise way? If something is goes complex sentence. देखिए कॉम्प्लेक्सिटी का एक सब्जेक्ट मैटर है। देखिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कम्युनिकेट करेंगे तो उसको भी आप कॉम्प्लेक्स बना देंगे, चाहे आप इकोनॉमिक्स में हो, चाहे आप साइंस में हो, चाहे किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे मेडिकल डिसिप्लिन में। पर्पस होता है कि डिसिप्लिन का पर्पस ये होता है कम्युनिकेट करना। If things are communicated in a simple way, right, that means you have shown understanding about the subject. If you are able to write and explain things in a simple language, that means you have shown a good understanding of your subject. But अगर उसी simple चीज को आपने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया जार्गन से, तो probably intended effect आप लूज कर जाते हैं, right? So हर डिसिप्लिन में एक ही रूल अप्लाई होता है, क्लैरिटी। और क्लैरिटी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जस्ट एक पर्टिकुलर वर्ड, एक पर्टिकुलर सेंटेंस को लिखने से आपके क्लैरिटी आप अचीव कर लेते हैं, यू कैन अचीव दैट क्लैरिटी इंस्टेड ऑफ having so many different kinds of words and so many rambling of words, so many circumlocution.
उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे लोग फिर पढ़ते नहीं है, राइट। पढ़ते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, से व्हाट यू मीन बिजनेस, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। इकोनॉमिक्स में भी वही अप्लाई होता है। यस जी। These days, jargons are very important. Like people are using some difficult words, just like tharur. Like you start saying sarir tharur. So either we joke, but obviously his English is. नहीं, थरूर साहब का यूज है, वो बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वे में एक नई चीज के कॉइनेज करते हैं, देन ही इज यूजिंग दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। वो एक अलग चीज है। लेकिन शशि थरूर राइट्स वेरी गुड इंग्लिश, राइट। डिपेंड करता है कहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है सर। जगह नॉवल पर उन्होंने इन्वेंशन किया है कुछ अपनी जगह पर, या कोई ऐसा सिचुएशन हो गया कि अब कई बार उन्होंने कहा सुबह में उठ रहे हैं और हमको चाय पीना है, बेड पर हैं, चाय पीना है और हमको सोच रहे हैं, उसके लिए उन्होंने एक कॉइनेज इन्वेंट किया था, मैं भूल रहा हूँ, राइट। तो अब वो एक कॉइनेज इन्वेंट हुआ, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई वर्ड नहीं मिल रहा है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, आप बहुत कॉम्प्लेक्स वे में यूज करते हैं, राइट। Sir, Shashi Tharoor introduced this word called cattle class related to No, airlines. that is a different thing. Cattle class is a different, वो तो bad connotation में है। बैड कनोटेशन में है। हाँ, he thinks he is an elite. वो जब उनकी बीवी का सुसाइड हो गया, in fact he was staying in a 5-star hotel in Delhi. Yes. Every day paying 10,000 rupees or 20,000 rupees a day rent उनका। He gets pension from the United Nations. He has lot of money. देखिए, he is not the best example. अगर आपको कोई बेस्ट एग्जाम्पल देना है, सिंपल एंड इजी इंग्लिश प्रोज विच वन राइट्स इन सोशल साइंसेस, एक नाम आपने सुना होगा, प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास, एक सोशोलॉजिस्ट। यस सर। की किताबें पढ़िए आप। each sentence is having 15 to 20 words. And once when he was in University of California, वहाँ पे विजिटिंग प्रोफेसर थे, वहाँ पे आग लग गई और उनका मैन्युस्क्रिप्ट जल गया, and from memory he rewrote the manuscript, and that book is published by University of California Press. सर उसका नाम रिमेम्बर्ड विलेज है। चेंजिंग विलेज या रिमेम्बर्ड विलेज है सर। रिमेम्बर्ड विलेज या और उसका उन्होंने टाइटल रखा था रामपुरा एक इमेजिनरी फिक्शियस नेम है। यस सर। या तो देखिए, इंग्लैंड में आजकल एक मूवमेंट चल रहा है। व्हाट इज दैट मूवमेंट? दैट मूवमेंट इज प्लेन इंग्लिश मूवमेंट। योर इंग्लिश शुड बी वेरी प्लेन। वन मिस्टर मार्टिन कट्स, उसका नाम है मार्टिन कट्स, उसने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है प्लेन इंग्लिश, पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, in which he cites many examples of great writers. One sentence of those great writers is in 15 lines, 20 lines, very complex. Why do you exhibit, ये जो jargons use करके आप रीडर को ये बताना चाहते हैं कि आपको ये वर्ड भी पता है, you are more knowledgeable. देखिए, you don't have to communicate that you know so many words and dictionary is in your mind. ये objective नहीं है, the objective is to communicate what you want to say. Please read Martin Cutts Plain English. Plain English को पढ़िए, आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से as easy सामने वाला समझ जाए आपकी बात को। तो वो कैसे लिखना है, it is an art. So a plain English book of Martin Cutts will help you to a large extent. This is a very nice suggestion, sir, coming from your side, sir. Right? To go for a very simple and clear language, plain English. Yes. Because the idea is to communicate. Yes. Not to show how many words you know. Yes, true. ये आइडिया नहीं है कि भैया मुझे ये वर्ड भी पता है, bombastic words, jargon, that those should not be used. In fact, writing difficult language is very easy compared to writing simple language. Writing simple language, that means you have mastered the complex situations of all complexity, and then you are putting things in a very simpler way to make your readers or audience understand. That is important. But when you start, initially what happens, when we start writing with difficult languages, full of jargons, cliches, right, technical terms.
Later on, when we mature with writing, we start moving on to the writing simple languages. So that is where writing easy language is very difficult, whereas writing difficult language is very easy. Friends, we have 10 minutes more. Anybody can make observation, ask question. Rashid sir, मेरा सर एक सवाल है सर। पूछिए। Yes, yes, please. Yes, please. जी जी, अभी अभी एक घटना घटी थी महाराष्ट्र में जी। भाषा के क्षेत्र पे कि आप मराठी में ही बात करो, मराठी में ही बोलो जी। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, ये तो एक लैंग्वेज रो है, लैंग्वेज वॉर है, और कोई ऐसी बात नहीं। मराठी में ही बोलिए और हिंदी में ही बोलिए, जहां तक हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मराठी वाले भी अच्छा हिंदी जानते हैं, हिंदी जो स्पीकर्स हैं बट हिंदी बोलते, हिंदी जानते हुए भी हिंदी बोलते नहीं है। नहीं बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मुंबई में ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब आप सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, सुनिए, चाहे वो मराठी महाराष्ट्र का आदमी हो, चाहे हिंदी स्पीकर हो, आप चाहे बॉम्बे में सब्जी ले रहे हो, चाहे वो महाराष्ट्र का आदमी यहाँ ले रहा हो, कहीं ले रहा हो, सबको कम्युनिकेट करना पड़ता है एक लैंग्वेज में, कहीं ना कहीं। नहीं तो आप या तो ज्यादा पैसा दे आएंगे या तो आप ठगा जाएंगे, राइट। तो वहां पर तो आप लैंग्वेज कौन सा यूज करते हैं? वहां पर तो आप रो की बात नहीं करते हैं। रो की बात तो आप तब करते हैं जहां एक पॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हो जाए। लेकिन जब आप सब्जी लेने जाते हैं, डॉक्टर से दिखलाने जाते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, टिकट लेते हैं रेलवे काउंटर पर, राइट, तो वहां पर जो लैंग्वेज वर्केबल होता है वहां पर आप यूज करते हैं। चाहे वो मराठी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, व्हाटएवर इट इज। देखिए, करंट प्रॉब्लम, ये जो आप करंट प्रॉब्लम को रेफर कर रहे हैं, ये इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेकिंग हिंदी कंपल्सरी इन ए स्टेट वेयर another language is there. तो ये इम्पोजिशन, कल्चरल इम्पोजिशन, ये पॉलिटिकल टूल बनाया। लोग अपोज नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपोज कर रहे हैं, किस करना है, और इसका सही जवाब आपको 12:30 बजे से 2 बजे तक आज जो हमारा लेक्चर है, हमारे दोस्त सिडनी से दे रहे हैं। वो टॉपिक भी हमने मदर टंग एंड लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स इन फेडरल इंडिया, ये टॉपिक मैंने दिया है उनको। ये आपको लास्ट सेशन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ओके, तो आपने गलत आदमी से सवाल पूछ लिया अभी। नहीं, नॉट लाइक दैट। लेकिन हम ये करेंगे सर, सो लॉन्ग एज कम्युनिकेशन इज हैपनिंग, मार्केट से आप लैंग्वेज सीखते हैं, मार्केट के लिए लैंग्वेज सीखते हैं। अब ये समझिए, आप मदर टंग इंस्ट्रक्शन है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या है, लिंगुआ फ्रैंका क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। जब हमें कहीं पर यूज करना हुआ, कोई भी चीज यूज करना हुआ, कोई चीज कब हमको इमरजेंसी पड़ गई लैंग्वेज की, तो आप कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे? हम सब्जी लेने गए मार्केट में, तो उससे हम अंग्रेजी तो नहीं बोलेंगे, कितना भी हम अंग्रेजी के बड़े जानकार हों, राइट, हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। हमको दवा लेना है किसी से, चाहे वो मराठा का आदमी हो, चाहे महाराष्ट्र का आदमी हो, चाहे साउथ का आदमी हो, चाहे कश्मीर का आदमी हो, चाहे कन्याकुमारी का आदमी हो, वो तो वहां जो लैंग्वेज यूज हो रहा है, जो टर्म यूज हो रहा है, उसको यूज करना जानता है। आप फ्रांस में चले जाइए, आपको 1-2-4 फ्रेंच वर्ड्स यूज करना पड़ेगा। आप यूरोप में चले जाइए, 2-4 वर्ड्स आपको यूज करना पड़ेगा। वो यहाँ पर आएंगे, हिंदुस्तान आते हैं, तो वो हिंदी का वर्ड पूछते हैं ऑटो वाले से कि यहाँ पर क्या कितना रुपया हुआ बताओ, तो दे आर वाइजर इन द यूजर्स ऑफ लैंग्वेज। वो अलग सिचुएशन है जो कि सर ने बताया कि एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, राइट। 16th सेंचुरी की मराठी अगर आप देखेंगे, 16th सेंचुरी की मराठी में 40% पर्शियन वर्ड्स आर देयर। इवन टुडे द कंटेम्पररी मराठी इज हैविंग 10% पर्शियन वर्ड्स। और जो मराठा एम्पायर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो पर्शियन था, मराठी नहीं था। पेशवा की दरबार में मराठी में डिस्कशन होता था, ये आई एम सॉरी पर्शियन में डिस्कशन होता था। ये एक मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको, अनदर एग्जांपल आई विल गिव। द वर्ड दलित, the word dalit is used all over India. It is a Marathi word, it is not a Hindi word. And dalit meaning, the meaning of the word dalit means broken, grounded. इन्हें आपने जमीन पे लिटा दिया। जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो सूद्राज हैं, अनटचेबल हैं, तो the idea is to communicate, convey the meaning that we are referring to. Dalit means we are referring to
ऑपरेस्ट क्लासेस। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज हुआ है दलित के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट है। दैट वर्ड वाज क्वाइंड बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स क्वाइंड शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। यस सर। हाँ, तो अगर ऑफिशियल रिपोर्ट्स में शेड्यूल्ड कास्ट रहेगा, वर्ड दलित नहीं रहेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir, yes sir, yes sir. That's a very important point sir. Right. Yes. सर Yes, Mrs. एक Kaur, और yes. बात, हाँ जी सर कलीग्स के साथ कभी कभी डील करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। सभी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और जब पर्टिकुलरली ओपिनियन का डिफरेंसेस आ जाते हैं, जी। तो उसमें भी अगर आप कुछ ऑब्जर्वेशंस या कुछ हेल्प कर सकते हो तो बताइए। आप एक बार फिर से फिर अपना क्वेश्चन जरा सा, हमने फर्स्ट लाइन सुना नहीं ठीक से हमने। हाँ सर बताइए। जैसे हम कॉलेज में हैं तो कॉलेज में कलीग्स के साथ जो इंटरपर्सनल रिलेशन डिफरेंसेस और पर्टिकुलरली अगर ओपिनियन में, अगर सपोज कोई मीटिंग चल रहा है और ओपिनियन की डिफरेंसेस हैं, तो वहां पे इंटरपर्सनल रिलेशंस को अच्छे बनाए रखने के लिए कैसे डील करें? वहां पर जो हम लोग एक्चुअली डिफरेंसेस ओपिनियन तो रहेगा ही किसी भी वर्क प्लेस पे। मतलब 10 आदमी हैं, 2-4 लोगों का ख्यालात हमेशा डिफरेंट रहेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसमें क्लैरिफाइंग स्ट्रेटजीज हम लोग यूज करते हैं, जिसको कहते हैं क्लैरिफाइंग स्ट्रेटजीज। और क्लैरिफाइंग स्ट्रेटजीज जो है, जो पोलाइट फॉर्म्स होता है उसको यूज करते हैं। मैं जैसे फॉर एग्जांपल I would like to have your attention on this issue. Suppose कि हमने कहा आपकी बात सुन लिया, however I would like to, if you can have your opinion on this issue. तो आपका वो जो क्लैरिफाइंग स्ट्रेटजीज को जरूर यूज कीजिए विद सर्टेन लेवल ऑफ पोलाइटनेस। वो ज्यादा ही वर्क करता है। क्या आप उनको बता दीजिए कि आई डू नॉट एग्री विथ यू और इसमें ये वर्जन है, राइट, इसको आप समझिए। ये लोग बताते नहीं है, इतना भी कम्युनिकेट नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये सोचते हैं कि हमारे प्रोफेसर हैं नाराज हो जाएंगे, हमारे सीनियर कलीग हैं वो नाराज हो जाएंगे, प्रिंसिपल साहब नाराज हो जाएंगे, वाइस चांसलर नाराज हो जाएंगे या एचओडी नाराज हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग में उन लोगों में ऐसे लोग होते हैं जो कि दे अप्रिशिएट योर पॉइंट, कि भाई इनकी बात हमने नहीं सुना, कि सुन लेते हैं भाई ये क्या कहना चाह रही हैं। सपोज कीजिए कोई किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, कहीं पर कोई चीज नहीं, आपको प्रोविजन नहीं हुआ, पेपर पर प्रोविजन के लिए कहा जा रहा है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला, आपको कहीं पर मान लीजिए सोलर सप्लाई लेना है, आपको एसी ही लगाना अपने कमरे में, तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं एसी नहीं परमिट करेंगे, लेकिन आप एक सजेशन देना चाह रहे हैं अथॉरिटी को कि अगर सोलर ये लगवा लेंगे तो हमको एसी का इसमें सप्लाई हो सकता है, राइट। अब इसको कम्युनिकेट करना, आप सोचना इसलिए नहीं कम्युनिकेट करेंगे कि हमारे छोटी नाराज हो जाएंगे, हमसे पूछा क्यों नहीं। तो उस यही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है कि उनसे कम्युनिकेट करके ये बताना कि सर दिस इज वेयर माय सेशन इज, एक सिंपल वे में। और आपको समझते, आज तो आप हमारे साथ आजकल तो मल्टी मोडालिटी है कि हम अगर बोल नहीं पाए तो हम ईमेल करेंगे, लिखित में देंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, बस कम्युनिकेशन करेंगे, जस्ट टू कम्युनिकेट, जस्ट वी आर कम्युनिकेटिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू, बस खत्म बात। इसका ये मतलब नहीं यू आर ऑफेंडिंग, इसका ये मतलब ये नहीं है यू आर ऑफेंडिंग योर चेयरपर्सन, यू आर ऑफेंडिंग योर डीन और यू आर ऑफेंडिंग योर कॉलेज प्रिंसिपल, नो नथिंग, जस्ट वी आर कम्युनिकेटिंग दैट दिस आल्सो कुड बी ट्राइड अपॉन। मतलब ये भी, इस ऑप्शंस को भी देखा जाए। ये तो कभी कभी अथॉरिटीज को मालूम नहीं होता है कि हमारे स्टेक होल्डर्स जो है कितने सेटिस्फाइड है उनके वर्क से या नहीं है, उनको उनका हाफ कम्युनिकेशन पहुंच जाता है, तो वो समझते हैं कि आई एम रनिंग इट वेरी पीसफुली, राइट सिचुएशन, राइट। बट जब उनको ये बात मालूम होती है तो उस पर दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पार्ट आल्सो, इट हैपेंस एवरीवेयर, राइट। अब कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कभी कभी, दैट इज अ मिस कम्युनिकेशन, जब आपने कुछ नहीं बताया, आप हर मीटिंग में चुप रहे, राइट, और एक ही आदमी बोलता गया, एक ही आदमी रिप्रेजेंट करता गया, बाद में नुकसान सबका हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। बाद में आपसे मुलाकात हो गई वाइस चांसलर की, उन्होंने कहा कि हमें तो ये मालूम नहीं कि आपने कभी बताया नहीं। कभी ऐसे भी होता है, नो मेनी पीपल डू नॉट हैव पेशेंस, वो लड़ लेते हैं जी। लड़ना अच्छा नहीं है। आपके डिफरेंसेस जो हैं राइटिंग में दे दीजिए, एंड एज प्रोफेसर निहाल जी सेड, गिव देम ईमेल टू योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैं क्या करता हूँ, सुनिए, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ईमेल हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं देता हूँ, उसको सीसी कर देता हूँ, कॉपी टू वाइस चांसलर, कॉपी टू डीन, कॉपी टू रजिस्ट्रार, 10 जगह भेजता हूँ, ताकि हायर अथॉरिटी ये नहीं कहे कि भाई हमें नहीं बताया आपने। यू नो यू हैव टू यूज सम स्ट्रेटजीज। अच्छा, वो जब ऊपर तक चला जाएगा ना, वाइस चांसलर तक चला जाएगा, तो वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है वो सॉफ्ट हो जाएगा।
वो अपने औकात में आ जाएगा, you know, to tell you in the blunt language. Yes. Yes. Friends, we had a wonderful session. Yes. I now request who will propose vote of thanks. No, sir, it's not needed. नहीं, It was a lovely interaction. So many people. मैंने हाथ भी रेज किया था, एक सवाल था मेरा। हाँ जी, पूछिए। सर, आपने इंटरव्यू के ताल्लुक से बताया कि इंटरव्यू बेसिकली इंटरपर्सनल रिलेशन पे बेस्ड होना चाहिए। ताल्लुक लिटरेचर से है, तो लिटरेरी इंटरव्यू में क्या ये रिलेवेंट होगा, या लिटरेरी इंटरव्यू का कोई तर्ज अलग होगा, उसका अंदाज अलग होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, लिटरेरी इंटरव्यू का तर्ज कोई अलग होगा, राइट? आप इंटरव्यू होता है, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं इंटरव्यू में, आप उनके ख्यालात को, आप उनका मुजाहरा हो रहा है, आप उनके ख्यालात को जानना चाह रहे हैं, तो उसका नॉर्म्स तो वही होगा। चाहे आप उर्दू में रखें, चाहे लिटरेचर के पर्सन से करें, सब नॉर्म्स तो है। चाहे पब्लिक इंटरव्यू है तो चीजें तो वही होगी। गोल्डन रूल ये है जी, जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसके बारे में बहुत कुछ रिसर्च करके पढ़ के जाइए जी। हमारे फारूक शेख एक प्रोग्राम करते थे टीवी पे जी, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम जी। आप उसको उनके एपिसोड को देखिए, जीना इसी का, कितना वेल रिसर्च था वो, और इतने सरप्राइजेस देते थे जिसको इंटरव्यू कर रहे हैं जी। यू हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द पर्सन whom you are interviewing. ऐसी बातें जो कभी वो खुद बंदा भूल गया हो, उनके बचपन के, उनके कॉलेज के डेज के, यू नो, दैट इज एन आर्ट and that shows how well prepared you are. Yes sir, yes sir. आपको प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा। ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकते हम किसी को इंटरव्यू करने के लिए। अगर टोनी ब्लेयर को करण थापर इंटरव्यू कर रहे हैं तो टोनी ब्लेयर के बारे में बहुत पढ़ेंगे, वो उनका पीरियड एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या था वो देखेंगे, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन क्या था ब्रिटिश पार्लियामेंट वो पढ़ेंगे, तभी तो आप, क्योंकि यू नो क्रॉस क्वेश्चनिंग होता रहता है। कई बार कुछ एक सवालात आप यू नो हैव इन द रिटन फॉर्म, सम क्वेश्चंस कम ऑन द स्पॉट व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग। यस सर, वो स्क्रिप्ट में नहीं है, तो इसीलिए हमारे प्रधान सेवक जी डरते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देना पसंद करते हैं। ये जो स्पॉन्टेनियस इंटरव्यू है ये बड़ा डिफिकल्ट है। पीपल लाइक मनमोहन सिंह हु हैड ए पीएचडी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वैसे लोग, विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग इंटरव्यू देने से नहीं घबराते हैं। और मनमोहन सिंह के सर हमको एक चीज बात याद आ गई। मनमोहन सिंह एक गए थे एक सर एक इसमें क्या कहते हैं, एक सिचुएशन था जहाँ वो गए थे, रशिया गए थे सर। तो उनका ये जो डिस्क्रिप्शन है ये लिख रहे हैं, शशि शेखर लिख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स में। तो मनमोहन सिंह के बारे में जो था एक व्यू जो निकल के आया था सर कि अब बाद में जब उनका डेथ हुआ, उससे पहले उन्होंने लिखा था हिस्ट्री विल जज मी मोर काइंडली, आपको याद होगा राइट? यस। तो ये शशि शेखर ने हवाला दिया था इसमें कि लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ हिज रिजोल्यूटनेस। ये कम्युनिकेशन की पॉइंट है, रशिया में थे ये, और वहां पर ये कोई जो है काफी स्टेट्स, हेड्स ऑफ स्टेट्स इकट्ठा हुए थे वहां पर किसी इसके लिए, कोई बहुत बड़ी मीटिंग थी जहां पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जरदारी, और उस टाइम जो है हिंदुस्तान में सर टेररिज्म का इशू था, कुछ अटैक हो गया था, एंड मनमोहन सिंह वेंट विद रेस्पॉन्सिबिलिटी देयर, एंड देन उनका जो उन्होंने कहा कि एट सच इवेंट्स, वहां पर एक फोटो शूट हो रहा था, फोटो शूट हो रहा था जिसमें कि सारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट वहां इकट्ठा थे। अब फोटो शूट्स में क्या हुआ कि सर उन्होंने जरदारी साहब के साथ मुलाकात हो गई। मनमोहन सिंह को, जिनको कहा जाता है कि बहुत वीक प्राइम मिनिस्टर, सर इनका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग था ये देखिए। शशि शेखर इज राइटिंग, तो वो लिख रहे हैं खुद, द ग्लोबल मीडिया वाज वाचिंग व्हेन द टू मेट, जरदारी एंड सिंह। Singh knew the event was being telecast live. Before Zardari could smile, Manmohan Singh dropped a verbal bomb. He said,
मिस्टर प्रेसिडेंट टू पाकिस्तान के जरदारी को कह रहे हैं सर, my country hasn't elected me twice to tolerate anyone expecting terror to on our soil. और everybody was shocked by मनमोहन सिंह मुंह पे कह दिया, मुंह पे कह दिया, straightforward talk. Yes sir. तो ये था मनमोहन सिंह के बारे में, और ये कम्युनिकेशन तब समझ में आया, हिस्ट्री विल जज मी मोर काइंडली. And after his death, Barack Obama, the former president of America, said, when Manmohan Singh used to speak, the world used to listen. Yes, sir. These are the best compliments. Yes, these are the best compliments from the former president of the United States of America for Manmohan Singh ji. जिनको बीजेपी ने कहा कि भाई मौन मनमोहन सिंह जी. जी. And then what he said there in Russia was at that point of time, जहाँ पर diplomats were not in a consultation or they were not in a formal meeting. He said at a very place where he could send the message very straightforward to the Prime Minister of Pakistan. Right place में right strike करना. जी, that is communication. एक strategy है. That is the highest क्या कहते हैं tool of communication. The greatest tool of communication. Right जगह पे right वक्त पे मारना, बात मारना. जी sir. Thank you. Thank you, Professor Raashid Nehal. Thank you, all of you. On behalf of this course and on behalf of 200 plus participants, I thank you. Thank you so much. Thank you also for agreeing to take this session. At the last minute, we had not given you enough time, but you presented a wonderful case study. It was a kind of post-mortem of Karan Thapar's style of interviewing. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. आप लोग you have to exit from this meeting. Thank you, sir. Thank you, sir. Still Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. 7 Thank you, sir. left. शाम तक देखे उसका बेटी मिल जाए तो सेंचुरी पूरी, और नहीं मिले तो चौका, तुम चार को मार दूंगा.